So now we're going to talk about why is writing least scoring. If I look at the global averages, uske andar listening happens to be number one scoring subject, speaking happens to be number two, reading happens to be number three, and writing happens to be number four. So this is the hierarchy in which the scoring is done globally, and that is the kind of scores that people get. Listening, they get the highest score. Always I have seen listening is the easiest thing to handle. Then obviously speaking is very easy to handle. Even reading is not that bad. I'm getting a lot of good scores in reading. As a matter of fact, more than speaking, we are getting better scores in reading. Reading is not that bad at all. You should know how to do it. Now, why is writing very tricky? The first problem is we use our existing education system to answer. Now, what happens? हम लोग ने वही पुरानी बात भाई ज़्यादा लिखो and I have seen you know what has happened this year in CBSE, ICSE and PSCB results. Everybody passed with 95% marks and we have been taught till 12th standard pages भर के आओ. कोई नहीं पढ़ेगा pages भर के आओ. This is not the case in IELTS. People read here and they read properly, like an X-ray vision they read. So make it sure that you don't do this mistake of 12th standard, that paper bhar ke aa jao. That's not a good idea. We are unclear about the checking criteria. That means we are not sure checking hoti kaise hai. We write irrelevant stuff. कहानियां लंबी लिख देते हैं हम, जिसकी कोई relevance नहीं होती. We make simple things complex. अच्छी भली चीज है सिंपल, उसे हमने कॉम्प्लेक्स करके एग्जामिनर को दे देना है और एग्जामिनर का बेड़ा गर्क हो जाएगा. उसको समझ नहीं आती, वो पागल हो जाते हैं एग्जामिनर बाय द इवनिंग, ये क्या लिखा है. We do not plan or revise. We clutter the writing. We write so many points in the writing that the writing becomes extremely cluttered. Cluttered मतलब senseless बन जाती है, पता नहीं चलता क्या है. Our focus is always on quantity than of quality. But in IELTS, we have to change our focus. We have to make it sure that quality wins, not the quantity. Quantity, though we know it, it is going to be 250 to 270 words. But in case of quality, that is important. We require minimum 7 bands. In case you're looking for a scholarship or you're looking for immigration, you require 7. That is the criteria. You have 7, you get scholarships, you get great immigration. Immediately, फटाफट cases clear हो जाते हैं. Writing parameters. Now there are 4 parameters of writing called as task achievement या task response. ये 9 band का होता है. Coherence and cohesion ये भी 9 band की है. Grammatical range and accuracy ये भी 9 band की है. और lexical resource भी 9 band का. टोटल मिला के 36 band बन जाते हैं. ऐसा है नहीं. 9 में से आंसर आता है ना, तो ये लोग उसे क्या करते हैं, averages निकाल लेते हैं. I'm just going to teach you how the averages are done, so you are very clear with how to get the marking. Now checking formula for task 1. Task 1 task achievement होती है 9 bands की, lexical resource 9 bands का, coherence and cohesion 9 bands की, grammatical range and accuracy फिर से 9 bands की, total बन गया 36 bands. अब out of हमने 9 निकाला है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम. Now task 2. Task response, यहाँ पे एक फर्क है. Task response, lexical resource again out of 9, coherence and cohesion again out of 9, grammatical range and accuracy same thing out of 9, total 36. Total bands out of 4 we will divide by 9. We will divide by 4, so total bands out of 9 बाहर आ जाएंगे. Now task 1 and task 2 combine कैसे किया जाता है? How do they combine them together? Well, task 1 को multiply करते हैं 1 के साथ and total बन गया 9. Task 2 को multiply करते हैं 2 के साथ बन गया 18. So total score हो गई मेरी 27. Bands out of 9 निकालने के लिए 3 से वापस divide कर देंगे. So हमारी इसे weighted average score बोलते हैं, and that comes out, and then we round it off to the nearest 0.5 bands. So let me show you one example. Task 1. Suppose a student gets 6 bands out of 9 in task achievement, 7 out of 9 in vocabulary, that is lexical resource. Coherence and cohesion में 6 bands आ गए out of 9. Grammatical range and accuracy 7 out of 9. Total आ गए 26 out of 36. That means 6.5 out of 9. अब देखते हैं task 2. Task response 7 out of 9. Lexical resource 5 out of 9. Coherence and cohesion 7 out of 9. Grammatical range and accuracy 5 out of 9. Total आ गए 24 out of 36. That is 6 out of 9.
Now let us combine them together. What do? Task 1 multiplied by 1, that is 6.5. Task 2 multiplied by 2, that is 12. Total कितने बन गए? 18.5 divided by 3 is 6.16. So total मेरा average rounded off to the next figure जो आती है 0.5, क्योंकि ये 0.6 के ज्यादा नजदीक है, so you'll be getting 6 bands. So this is how the finalization of the scores are done. So now remember the golden tip. Task 2 is more bands, definitely more. Do it first. अब देखो, इसमें ना आपके task 1 में the score was 6.5, whereas task 2 में the score was 6, and overall score I got 6. That means the task 2 has more importance. अगर ये उल्टा होता, suppose 6.5 यहाँ पे होते और 6 bands यहाँ पे होते, तब मेरी overall score बन जाती 6.5. So keep that in mind. This is a very, very important thing. Keep this in mind. Now, next thing is task 2 holds more bands. Do it first. Very important. Now, the tips and the parameters, how to improve your scoring. Task achievement. So I'm going to do it one by one, and I'm going to explain you all the criteria so that you are very clear हम क्या कर रहे हैं. Task achievement. Examiner क्या देखता है इसमें? ये task 1 में होती है, तो वो पहले तो चीज देखता है, क्या आपने 150 वर्ड लिखे हैं? Have you written 150 words or not? तो पहली चीज तो यहीं पे उड़ा देता है बंदों को, आपके 150 वर्ड हुए कि नहीं हुए. Second, does the writing address all the parts of the task? अब letter में there are 3 prompts. In the graph there are multiple main points. क्या हर चीज को address किया है या नहीं किया? Were all the prompts and main points addressed? Was the tone correct? Tone मतलब अगर letter है informal लिखनी है, informal tone है या formal tone है. Similarly for task 1, you have to see in academic what tone am I going to use. If you're being too informal, marks will be deducted. Does the task 1 reach its purpose? क्या उसने purpose achieve किया? तभी हमारा नाम यहाँ है task achievement. Purpose achieve करना चाहिए. अगर purpose achieve नहीं होगा ना, तो marks नहीं आते. That purpose needs to be achieved. That is why it is called task achievement. And is there any irrelevant information? Irrelevant information matlab, now let us see. What is irrelevant information? Suppose you are a general student and a letter is given to you regarding आपका passport gum ho gaya and you have to get a new passport done. So you start writing irrelevant information. I am from India. I do this job. I am this and that. He is not even bothered. So why do you want to write all that stuff? Similarly, in case of task 1 academic, what happens in task 1 academic is we tend to predict. अब ऐसा होगा, ये हुआ है तो ये हुआ होगा. We don't need to write all that. We don't need to use our brain in task 1. We just need to address the points which are given there. That's it. Do not exaggerate things. Do not write unnecessary stuff. Number nahi aayega. Let's see the next one. Next one is called task response. Task response kahan pe aata hai? Ye aata hai task 2 mein. वहां task achievement नहीं होता, task response होता है. Are there enough words? That is the first thing examiner will check. 250 is minimum. 270 तक लिख सकते हैं. Does the essay address all the parts of the question? Okay. Is the writer's position clear? Are arguments and examples good enough? अब ये चीजें हैं मेरी task response के बाद. तो अब पोजीशन आपकी क्लियर होना चाहिए. आप चाहते क्या है भाई? ऊपर अग्री कर दिया, नीचे डिसएग्री कर दिया, you lost the game. Now, are the arguments, examples good? Are they connected to the main topic or are they not connected to the main topic? Coherence and cohesion. Is there linkage and progression? You know what is progression? Progression क्या होता है? Firstly this happened, then this happened, then this happened, then this happened. A progress is happening. Does that happen in your task? Progression होता है या नहीं होता? That they see, which is very important. Linkage मतलब is everything connected together या loosely connected है सब चीजें. That won't work. Is there a variety of cohesive devices? Cohesive devices मतलब जैसे आप words use करते हैं, however, furthermore, या बार-बार एक ही चीज repeat करी जा रहे हैं. Is there a variety of cohesive devices? Are the paragraphs adequate? Paragraphs adequate का मतलब है 5 बनाए हैं या 4 बनाए हैं. Is that adequate or not?
Lexical resource. Does the candidate paraphrase the task? जो ऊपर task लिखा है candidate ने अपने शब्दों में समझाया कि नहीं समझाया? Is there less common vocabulary? Are there mistakes in collocation and word choice? इसमें गलतियां तो नहीं करी हुई? Are the words spelled and formed correctly? यहाँ पे spellings भी आते हैं. You have to be very clear about lexical resource. Spellings are going to come. Now we talk about grammatical range and accuracy. Does the candidate use a variety of structures? क्या उसकी variety है? Past, present, future. इन चीजों को लेके उसने structure किया अपना. Are there many grammatical mistakes? अगर बहुत grammatical mistakes होंगी, कोई chance नहीं है that you are going to get good math score. If there are many grammatical mistakes, it is impossible. Now we talk about the improvement plan. Now, what is an improvement plan? We need to see that. Improvement plan होता क्या है? Improvement plan का मतलब है, you got the criteria, you have your writing. How am I going to improve my writing? Is there a way to improve my writing? So let us see how to make an improvement plan. तो सबसे पहली चीज तो है cut the flap. हमें ये मोटा essay नहीं चाहिए. We don't want this fat essay. What we're looking for is a leaner version of a person. Leaner version. We do not want this version. We want a leaner essay. So that is called as cutting the flap. अब देखते हैं how to cut the flap. So I request Amrita to please read this loudly. Example 5 bands. Even after the doomsday of nuclear warfare, when all the known signs of life will be swept off by electromagnetic radiations, a tiny familiar animal with twin antennal flagella and jointed legs, though with faded exoskeleton, will come out from a weary hole on the face of a red burnt cliff to be the new master of this once Homo sapiens dominated piece of the universe. Oh my God, that was a pain to read. But if you talk about a scientific journal, this is beautiful for a scientific journal. But is your examiner a scientist? And my answer is no. He is not a scientist. So do not write this scientific language. Okay, so let me show you what things are irrelevant here. अब देखिए, ये जो इतना लंबा नाम दिया है, a tiny familiar, ये इतना लंबा नाम दिया है, ये. This is basically a cockroach. So he is basically talking about a cockroach. Okay, so I write it down in one word, cockroach. So here, doomsday, even after the doomsday of nuclear warfare, electromagnetic radiations, he is talking about nuclear war. Nuclear war. And here he is talking about survival. So he is saying it will come out and survive. So basically कहना क्या चाहता है ये कि न्यूक्लियर वॉर जो है कॉकरोचेस सरवाइव कर जाएंगे अंदर, बस ये कहना चाहता है. इतनी लंबी कहानी ये कहने के लिए. A cockroach can survive through nuclear war. Simple. This is 7 band and this is 5 band. Now you need to understand 7 band और 5 band में फर्क क्या है. The main difference between both is it should be understandable. जो आप लिखते हो एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए. हम क्या कोशिश करते हैं, इतने मोटे मोटे वर्ड्स डाल दें, इतना मोटा लिख दें सब जगह. मतलब we don't even care एग्जामिनर को समझ आएगी कि नहीं आएगी. भाई वो एग्जामिनर है, अंतर्यामी नहीं है वो. He is not a mind reader that आपने कुछ सोचा और उसको समझ आ गई. He is going to read your paper. So make it sure you write simple and understandable. Relevant होना चाहिए. That is the most important thing. Let's see what is coherence and cohesion. Coherence is the connection of your ideas at the idea level. And cohesion is the connection of your ideas at the sentence level. So basically, ये बात कर रहा है paragraphs की और ये बात करता है sentences की. Coherence का मतलब paragraphs connect होने चाहिए, cohesion का मतलब sentences connect होने चाहिए. So दोनों चीजें connect करनी जरूरी है. The difference between
Sentences and paragraphs, वो तो आपको पता ही है क्या होता है. Okay, so connection is very important. Connect it. How to connect it, वो देखेंगे आज. So let us do some research work. So let me take help of Tanish Dheer. Okay, Tanish, can you read this for me, please? Yes, sir. There are many negative effects of global warming to our planet. It can cause the melting of the polar ice caps. It can cause the rising of the water levels. It can cause flooding in low-lying areas. It can cause skin problems. It can expose us to harmful ultraviolet rays from the sun. Great. अच्छा, अब ये देखो, ये क्या कहना चाहता है भाई? अच्छा लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट इसकी एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम देखते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पैराग्राफ? इसने ऊपर मेन पॉइंट बताया, ठीक है, ये मेन पॉइंट बता दिया. तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ साइड पे थोड़ी सी जगह पे. ये इसने मेन पॉइंट बता दिया, छोटा सा. मैं इसको एम लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसके नीचे सारे सेंटेंसेस दे दिए इसने, सारे पॉइंट्स दे दिए, और इसने एक क्लटर कर दिया. क्लटर मतलब इतने पॉइंट्स दे दिए हैं, कहने की हद नहीं है. तानिश, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ इट? इट कितने हैं यहाँ पे? एक इट, दो इट, तीन इट, चार इट, पांच इट, सारे इट्स हैं यहाँ पे, सारे ही इट्स लगे हुए हैं. तानिश, कैन यू सी द नंबर ऑफ इट्स? Yes, sir. अब ये सारे पॉइंट्स इसको कनेक्ट कर रहे हैं, बट इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये आपस में कनेक्टेड नहीं है. दे आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर. मेन पैरा को तो कनेक्ट कर रहे हैं, बट आपस में कनेक्टेड नहीं है. मतलब आइडिया लेवल कनेक्टेड है, बट सेंटेंस लेवल कनेक्टेड नहीं है, कोहेसिव नहीं है, ये खाली कोहेरेंट ही है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. अब एक और पैरा अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके लिए मैं किसी और को रिक्वेस्ट करता हूं करने के लिए. So we have Riyanka Kotwani. Riyanka, can you read this out for me loudly, please? Yeah. There are many negative effects of global warming to our planet. This phenomenon, which is a growing concern among many people worldwide, is brought about by many different factors. However, there are several things we can do to help alleviate the problem that it causes. Wonderful. Now, thank you, Riyanka. Now, see, now let's make a small diagram of this again. Now, what happens in this case? Examiner देखता कैसे, सोचता कैसे? वो देखा कि ये है मेरा मेन पॉइंट, तो उसने मैंने एम लिख दिया. इसके नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है. देयर इज नो सपोर्ट. तो इसने क्या किया है? इसी मेन पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया आगे. ही इज कनेक्टेड द मेन पॉइंट अगेन एंड एक्सटेंडेड इट फर्दर. सो बेसिकली देयर इज नो, इट इज जस्ट कोहेसिव. सब कुछ जुड़ा है बहुत अच्छी तरह से, but it is not coherent. There is no idea in it. Idea level is missing. What is he talking about? Which phenomena? Negative effects हैं कहाँ पे? है ही नहीं है. This phenomena, there are several things we can do. He is not talking about the negative effects at all. So that means this is beautifully done, I understand, but it is not making sense. So not a good idea at all. So let us see the last one, and I'm going to unmute somebody else now. Gurnur. Gurnur, can you read this out for me, please? Yes, sir. There are many negative effects of global warming to our planet. First, it can cause the melting of the polar ice caps. This will result to a rise of sea water levels and cause floods in low-lying area. Second, global warming and the thinning of the ozone layer exposes us to the harmful ultraviolet rays from the sun, making us prone to developing skin-related problems such as sunburn or skin cancer. Wonderful. So now this is much better as compared to the last two. So let us see how is it better. तो देखो, इसने ना सबसे पहले ऊपर बोल दिया there are many negative effects of global warming. So पहला first, second. तो दो बातें तो निकलाई. तो अब मेरा डायग्राम ऐसा बन जाएगा. तो मैंने यहाँ मेन पॉइंट बनाया, and this is my first point and this is my second point. Good enough. दोनों points connect कर गए जी आपस में. First, it can cause the melting of the polar ice caps. अब this is a beautiful connector. This मतलब this melting of the polar ice caps will result in a rise of sea water levels and cause floods in the low-lying areas. तो इसको इसके साथ में इसने और चीजें कनेक्ट कर दी.
So I am connecting two arrows together to see how is it. अब first and second word दिया है, so that means इन दोनों को भी इसने connect कर दिया. He has joined these two also. Second, global warming and the thinning of the ozone layer exposes us to the harmful ultraviolet rays of the sun. तो इसने इसको भी आगे further example देके support कर दिया. So see, बड़ा complex structure यहाँ पे बन गया है, which is much better. It is coherent and it is cohesive. Both things are there. Coherent भी है, cohesive भी है. Examples भी दिए हैं, and this turns out to be much better as compared to the first two. So let us see what is lexical resource and how do we improve the lexical resource. So I think now you're getting the hang of it, how to do it. Gunur, samajh aa gayi? Yes, sir. Great. So let us see the next plan of our essay, lexical resource. 20 टॉपिक हैं सिर्फ आइल्स में. अगर आप हर एक टॉपिक के पीछे 20-30 वर्ड्स याद कर लो पर टॉपिक, अपना रिवाइज करते समय चेंजेस कर दिया करो थोड़े बहुत. मैंने ये टॉपिक में ये लिखना है, ये वर्ड में ये लिखना है, और स्पेलिंग्स चेक कर लिया करो, तो आपका लेक्सिकल रिसोर्स कभी प्रॉब्लम में नहीं आएगा. हमें सिर्फ 10 गुड क्वालिटी वर्ड्स डालने हैं. We have to write 10 good quality words in one essay. If we do it, we are in a good condition. Similarly, task 1 में if we write 5 good quality words, ये फॉर्मूला याद रख लो. 5 task 1 में, 10 task 2 में, आपकी लेक्सिकल रिसोर्स अच्छी हो जाएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं है. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी रिवाइज करना जरूरी है. डोंट मेक थिंग्स टू कॉम्प्लेक्स. एग्जामिनर इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट योर माइंड रीडर. आप कहते हो भी मैंने ये सोचा था, मैंने ये बताना चाहता हूं, वो थोड़ी समझ सकता है, वो तो समझ ही नहीं सकता आपकी बात क्या है. टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रिस्पॉन्स प्लान करो, सारे पार्ट्स को एड्रेस करो. बी फर्म ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फर्म ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखते हैं 9 बैंड्स होते क्या है. क्या 9 बैंड का मतलब है परफेक्ट स्कोर है? मेरा आंसर है नो. परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती इसकी. इसका क्राइटेरिया मीट कर जाता है. That is why it is called as 9. So I have seen a lot of people who are at a very basic level of English. They get 7 bands easily. But I have seen PhDs in English unable to get 6 also. Because they make the things very, very complicated for the examiner to understand. Examiner को समझ ही कुछ नहीं आती. आप बोली जाते हो, उसको कुछ समझ में नहीं आती. So that is a problem. Okay. So let us see. 9 बैंड का आपको एक सैंपल दे रहा हूं. 9 बैंड होता क्या, अभी हम लिखेंगे भी ऐसे, सारे हम मिलके लिखेंगे ऐसे, यहां बैठ के अभी ऐसे कंप्लीट करेंगे. टास्क अचीवमेंट 9 बैंड का बता रहा हूं. फुल्ली सेटिस्फाइड ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क, क्लियरली प्रेजेंट्स अ फुल्ली डेवलप्ड रिस्पॉन्स. ये टास्क अचीवमेंट है. ये 9 बैंड तभी मिलेंगे. टास्क रिस्पॉन्स ऐसे में 9 बैंड कब मिलेंगे? fully addresses all the parts of the task, presents a fully developed position in the answer to the question with relevant, fully extended and well-supported ideas. What is coherence and cohesion? Coherence and cohesion का concept क्या है? Coherence and cohesion का concept इतना मुश्किल नहीं होता. Uses cohesion in such a way that it attracts no attention, carefully manages paragraphing, which is very important. Lexical resource uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticated control of lexical features. Rare minor errors only occur as slips. ये मैं कॉपी किया हुआ है from IELTS वेबसाइट, अभी आपको लेके जाऊंगा वहां पे. Grammatical range and accuracy 9 बैंड कब आएंगे? Uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy. Rare minor errors can be there, but they're only slips. That's okay. So now my next thing is now the final plan. Now the final plan, how to write the final plan of the whole thing. कुछ चीजें हम याद रखेंगे. डिजाइनिंग कैसे करनी है हमने अपनी राइटिंग की. डिजाइनिंग करनी जरूरी, बिकॉज इसको मैं अभी यूज करने वाला हूं, आपके सामने यूज करके दिखाऊंगा किस तरह से डिजाइनिंग को यूज किया जाता है. द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज टास्क 1 एंड टास्क 2 को कम से कम 2-2, 3-3 बारी पढ़ो. यू शुड रीड देम 2 times or 3 times at least. Next thing, mark the keywords. They are very important to mark the keywords. Understand the given task. You should understand what is the task about. Understand it. Make a plan of paras. Paras ka plan kijiye. Then
Why did you choose that stand? आपने वो issue के ऊपर stand क्यों लिया? Reasons दो, examples दो. This is very important. Choose relevant vocabulary and phrases. So this is my designing of the writing. Visualize before you write. This is my favorite tip. Visualize before you write. So you should do what? Before writing down an essay, the whole essay should be in your mind very clearly. कि मेरा essay की शक्ल ये बनेगी. This is the way it is going to look after I write my essay. That is very important. Very important. Actual writing. So now जब हम planning तो कर चुके हैं, जब हम actual लिखते हैं, हम पूरे plan को stick on नहीं कर सकते. हमने सोचा था ये वही लिखेंगे. कभी-कभी flow में लिखते-लिखते आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाता है, वरना आपका natural flow खत्म हो जाता है. Natural flow बहुत जरूरी है. Count the words after each paragraph. After you write the para, count the words. Revise as you write. It is very tough to add words or sentences later on. जैसे आपने लिखा एक पैरा, रिवाइज कर लो. 2-3 सेंटेंस लिखे, रिवाइज कर लो. बाद में रिवाइज करना बहुत मुश्किल है. सीडी आइल्स में तो हो जाता है, पेपर बेस्ड आइल्स में नहीं होता. नाउ रिवाइज एंड एडिटिंग के टाइम पे हमने क्या करना है? आप ना ये स्लाइड को अपने पास फोटोग्राफ करके रखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. स्पेलिंग्स चेक करो, बहुत जरूरी है. स्पेलिंग्स चेक करो, ग्रामर चेक करो जब रिवाइज करते हो. गंदी हैंडराइटिंग है, उसे ठीक करो. लॉजिकल कनेक्शंस नहीं जुड़ रहे, however, furthermore, apart from that, ऐसी चीजें नहीं लगाई तो लगाइए, जरूरी है ये. एग्जाम्पल्स देखो दिए कि नहीं दिए. व्यू पॉइंट अपना देखो, ऊपर अग्री है नीचे डिसएग्री है, गलत हो जाएगा सारा इससे. व्यू पॉइंट चेक करो अपना क्या होता है. कंप्लीशन ऑफ द टास्क, टास्क कंप्लीट करना है आपने. नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं लिखो. ऑफ टॉपिक तो नहीं हो रहे आप, मेमोराइज तो नहीं है, रट्टे तो नहीं मारे हुए. ये रिवाइज करने का तरीका. अब आ गया मेरा टाइम प्लान. व्हाट इज माय टाइम प्लान? सो रिमेंबर द टाइम प्लान. माय टाइम प्लान इज दैट आई हैव टू डू टास्क 1 in approximately 17 to 18 minutes. So 17-18 मिनट का मेरे पास टाइम प्लान होना चाहिए. 3 मिनट डिजाइनिंग में लगाओ, 3 मिनट रिवीजन में लगाओ और 12 मिनट लिखने में लगाओ. तो आपके 2 मिनट फिर भी यहाँ पे सेव हो जाए. अब बात करते हैं टास्क 2 के डिजाइन की. 7 मिनट लगाओ डिजाइन करने में, 7 मिनट लगाओ लिखने में, 14 मिनट हो गए. 25 मिनट लगाओ 7 मिनट रिवाइज करने में और 25 मिनट लिखने में. सो इफ आई डू द टोटल्स इट कम्स आउट टू बी 39 मिनट्स. तो आपका 1 मिनट यहाँ पे बच जाता है. सो मेरे पास 3 मिनट्स एज अ बफर बच जाते हैं. सो आई कैन यूज दिस टाइम टू सी द ओवरऑल थिंग. ठीक किया कि नहीं किया, कुछ भूल तो नहीं मैं गया. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज वेरी वेरी. So this is the idea behind the whole thing.